Hello, Mathurima, you're watching Hornbill TV's Prime Time. Palestinian President Mahmoud Abbas has announced that the legislative elections will be held in late November this year, the first since 2006. President Abbas issued a presidential decree setting Saturday, November 28, 2026 as the date of holding legislative elections across all Palestinian territories including Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip. Wafa reported that the president through the decree shall on the Palestinian people to participate in the free and direct legislative elections to elect members of the Palestinian Legislative Council on specified date. The decree aimed to consolidate the foundations of democracy and complete the electoral process that has begun in the state in Palestine. If the vote goes ahead, it will be the first in 20 years. The last legislative election in the Palestinian territory were held in 2006 when Hamas secured a victory, defeating Abbas' Fatah party, which had previously dominated Palestinian politics. The defeat led to a split within the party, culminating in Hamas taking control of Gaza in 2007, Al Jazeera reported. As a result, the Palestinian Legislative Council (PLC), the parliament of the Palestinian Authority, had met since 2007. At least 11 people have died, 19 others remain unaccounted for, and around 600 residents have been displaced after a massive wildfire swept through southern Spain's Andalusia region, which authorities counting intensive firefighting operations amid concerns over changing wind conditions. In a statement, the regional government of Andalusia confirmed that the death toll from the wildfire that broke out in the municipality of Los Gallardos stands at 11, correcting earlier reports at 12 fatalities. The fire is currently affecting the municipalities of the Los Gallardos, Pedas and Antas in the Almeria province of Spain. The regional government stated that approximately 600 people remain displaced from their homes, with around 120 residents having been evacuated overnight, joining those previously evacuated from Alamozazia neighborhood, Fuente del Albarrios, Los Pinos, La Serena and the Pinar area of nearby Bidara. Authorities said 74 evacuees have been accommodated by the Lubrin Theatre and another 74 at Garucha Theatre. Antonio Sanz Caballo, Andalusia Minister of Presidency, Health and Emergencies, appealed to residents to strictly follow official safety directives issued during the emergency. Ya la ha dado, ya la ha dado, ya la ha dado. Anda, 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 mira, mira, mira quemándose las casas. Quemándose las casas. Míralo, se está quemando la casa, ¿la ves o no? Lo tenemos aquí arriba, ¿eh? Shiv Sena co-operator Ramesh Mhatre, the prime accused in the alleged assault case on doctors and nurses at the KDMC Sastrinagar Hospital in Dombivli, sent to police custody till 13 July by Kalyan Court. He produced before the Kalyan Sessions Court for extension of the police remand today. Mhatre was discharged from Thane Civil Hospital this morning after doctors declared him medically stable and fit for discharge. The court hearing it expected to decide whether the police custody of the accused will be extended or whether they will be sent to judicial custody. Police are also likely to present details and additional evidence and information gathered during the ongoing investigation. Dr. Mahendra Bhaviskar, the father of the Dr. Shrishti Bhaviskar, one of the doctors allegedly assaulted by Mhatre, had stated that until justice is served, doctors will continue their strike.
कल्याण न्यायालयामध्ये हजर करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा जी आहे ती झालेली आपण बघू शकतो या ठिकाणी कल्याण न्यायालयामध्ये पाहायला गेलं तर तुमच्यावरती आरोप होत आहेत. The Indian Army swiftly deployed its medical team to Venezuela following the recent tragedy, providing critical emergency healthcare to those affected. Director General Armed Forces Medical Services DGAF-MS Surgeon Vice Admiral R.T. Sadin said on Friday. She stated that the team was fully prepared to rapid deployment and reach Venezuela after a long journey. Upon arrival, the Army established a field hospital at the designated site provided by the Venezuelan government and immediately began delivering medical assistance, including emergency first aid surgeries for the injured. Hospital was deployed over there, but the team has come back. How is the experience? What exactly? Yeah. So I have not been able to interact with them yet because we were here when the team returned. We have been in constant touch with them. They took off as fast as they could when the tragedy happened. They are always prepared. We in the Army Medical Corps are always prepared, 24/7, 365. So it was a very quick response. They flew across, for so many hours. They reached there in time. They established their hospital in a pre-designed area by the Venezuelan government, and they have been imparting. They did a lot of initial first aid surgeries. The population was extremely grateful, as you could see on social media. There were several, social media posts on that. And this particular unit of the Army Medical Corps, which is the 60 Para Field Hospital, is actually known for it right from the 50s when they were deployed in Korea. They have excelled themselves at every mission that they have gone for, and they have earned the nation a very, very good name to be available anytime, anywhere, and for whoever. So we had them deployed in 23 and Operation Dost in Turkey, Operation Brahma in Myanmar, and then in Sri Lanka in December of 25, and now Operation Amstrad in just this month. So that's what is the ethos of the 60 Para. They are a very important part of the Army Medical Corps and the Armed Forces Medical Services. Just supplementary question to this, because Airborne Hospital has been there in the service in the forefront right from, as you mentioned, 1950, 60 to. Are we planning to extend this service to our units also, posted in partner areas, like when it is required? Like yes, they always respond to any national as well as international. That's why I said anytime, anywhere. I have not mentioned the several times they have gone whenever there are floods or there's a local issues. They are always there, and we don't deploy the whole place. We can deploy, they are in such a way we can deploy parts of them also. We'll take a short break. Watch. बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं ने स्कूलों का कायाकल्प करके हर बच्चे को निपुण बनाने का संकल्प लिया है। मिड डे मील से बचपन को पोषण मिल रहा है तथा समग्र शिक्षा अभियान से भविष्य रोशन हो रहा है। शारदा
कार्यक्रम ड्रॉप आउट बच्चों को हर दिन स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहा है और बाल वाटिका नन्हे मुन्नों को खेल खेल में स्कूल आना सिखा रहा है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसिंचित। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी कारण विद्यालय नहीं जा पा रहा, तो स्कूल चलो अभियान का लाभ उठाएं। तत्काल उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। Welcome back. The Delhi High Court on Friday sought the response of the University of Delhi on a petition filed by a Myanmar refugee challenging the university's requirement that foreign students must possess a valid non-Indian passport for admission to undergraduate courses. During the hearing, Justice Jasmeet Singh questioned the university's stand, asking its counsel, "How can you expect a passport from a refugee?" The court granted time to the university to obtain instructions and listed the matter for further hearing on July 13, 2026. The petition has been filed by Henry To Aongling, UNHCR recognized Myanmar refugee, through advocates Ashok Agarwal and Kumar Utkarsh. The plea challenges the validity of passport requirement contained in Delhi University's foreign students registry admission bulletin, contending that it's unlawfully excludes recognized refugee who, by the very nature of the status, cannot obtain passports from the countries they fled due to persecution. The petitioner has sought directions to either strike down or read down the impunged condition and to direct the university to consider his application for the admission under the foreign students category without insisting any production of a passport. The Ministry of Home Affairs has issued fresh directions to all state governments, union territory, UT administrations and central ministries, reiterating the rules governing the signing and playing of the national anthem and the national song and calling for strict compliance. In a communication issued on July 9, the MHA wrote to the chief secretaries and administrators of all states and union territories, as well as secretaries of all ministries and departments of central government, enclosing the existing order relating to the national song and the national anthem. The ministry said the orders contain an exhaustive list of occasions on which the national anthem and the national song are required to be sung or played, as well as the occasion where they may be sung or played. They also specify instances where both are to be rendered during the same program, including at the beginning and the end of the event. The MHA reiterated that whenever both the national song and the national anthem are performed together, the national song must be sung or played first, followed by the national anthem. It further clarified that in states where a state song is also rendered, state song is also sung and played along with national anthem and national song. The ministry also stressed that the correct script, text, diction and pronunciation of both the national song and the national anthem must be followed strictly while rendering them. Tripura Chief Minister Manik Shah on Friday criticized opposition parties for opposing the government's decision to prohibit private practice by in-service doctors of Agartala Government Medical College AGMC and Govind Ballabh Brand Hospital, saying that the move has received support from the medical fraternity and is aimed at improving patient care. Speaking at the inauguration of the private hospital in Agartala, Shah, who also holds the health portfolio, said the government has consulted major doctors' associations before taking the decision. He said the administration has assured doctors that their legitimate concerns, particularly those relating to financial benefits, would be addressed. কনফার্মেশন নিতে পারি যে আমরা ঠিক রাস্তায় চলছি। তো আমরা সেই বিষয়ে আমরা জানি যে যে আমরা চাই যে যেমন ফর এক্সাম্পল জিবি হাসপাতাল এই প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে খুব ডাক্তারদের কোনো সমস্যা নেই, ওনাদের কনফিডেন্সে রেখে কিন্তু আমরা কথা বলেছি
ওনারাও বলেছেন না তাহলে আমাদের যদি বেতন কাঠামো যদি আপনারা ঠিক করে দিন, আমাদের ইনসেন্টিভ যদি বাড়িয়ে দিন, এবং যে 7 পে কমিশনের যে নির্দেশ মতো ওনাদের সাথে কথা বলা হয়েছে এবং বলেছি যে আমরা যে 20% আমরা যেটা বাড়াবো সেটা মূল বেতনের সাথে আমরা যোগ করে দেবো, যাতে তার পেনশন বেনিফিট পায়, ডিএর সাথে যুক্ত করে দেবো। যা যা ওনারা চাইছেন ওনাদের প্রমোশন থেকে আরম্ভ করে সব করবো। কিন্তু ডাক্তারবাবুদের কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু দেখা যায় বিরোধী দলের ওরা খুব হইচই করছে। আরে অরুণ মেরুদন তাদের সমস্যা, ডাক্তারবাবুরা বলছে আমাদের তো কোনো সমস্যা নেই। আমি কিছুদিন আগে যখন ডক্টরস ডে উপলক্ষে আমি গেছি, সবাই এসছে, সবাই বলছেন উই আর হ্যাপি, নো প্রবলেম। আর আমরা চাইছি যে একটা জায়গার মধ্যে স্টার্ট হোক, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে। তো শুধু গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ আমরা খালি এই ব্যবস্থাটা শুরু করেছি। এখানে তো প্রচুর ডাক্তার আছে যারা প্রাইভেটও করছে, প্রচুর ডাক্তারবাবু আছেন প্রাইভেট, কোনোদিন গভর্নমেন্ট হসপিটালে ওরা যাননি, ভালো করছেন, প্রচুর পেশেন্ট দেখছেন। এবং আমি একটা হিসাব দেখেছি, কয়েকজন ডাক্তার মাত্র জিবি হাসপাতালের যাদেরকে বলা হয় যে প্র্যাকটিস করছে, খুব বেশি একটা না। তো সেই জায়গায় তাদের সমস্যা নেই, এবং তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের সাথে কথা বলে কিন্তু আমরা করেছি, এবং সেটা নোটিফিকেশনও বেরোবে এর মধ্যে। তো আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে জনতা জনার্দন, মানুষ খুশি থাকতে হবে, সাধারণ মানুষের ট্রিটমেন্ট যাতে পায় সেই ব্যবস্থা আমরা করতে আমরা চেষ্টা করছি এখন। কিন্তু এই জায়গায় আজকে এই ধরনের যে টাইম হসপিটাল এবং কার্ডিয়াক অ্যান্ড মাল্টি স্পেশালিটি যারা এখানে বলা হয়েছে, বিভিন্ন ওনারা ডিসিপ্লিন এখানে শুরু করছে, তাদের এখান থেকে যখন পেশেন্টরা যাবে তারাই কিন্তু ওয়ার্ড অফ মাউথ, সারা ত্রিপুরাতে না আমরা টাইমস হসপিটালে আমরা গিয়েছিলাম, এবং যাওয়ার পরে এত সুন্দর ব্যবহার। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই হসপিটাল করার সুবাদে যারা এখানে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ করবে, আর এই এলাকার মানুষের সুযোগ হবে। সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই এলাকার মানুষের সুযোগ হবে। তো এই জায়গায় আমাদের সবসময় নজরদারিও দরকার, ডাক্তারদের উপর সবসময় একটা সফট টার্গেট। আমি তো সব জায়গায় বলি ডাক্তারবাবুদের উপর চড়া হওয়াটা খুব ইজি হয়। তো ডাক্তারবাবুদের উপর চড়া হওয়ার আগে একবার আমি বলছি সাধারণ মানুষকে যে একবার ভাববেন যে আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ডাক্তারবাবু লেখে উনার সার্টিফিকেট নিয়ে কিন্তু আপনার আসতে হয় যে আই এম বর্ন। আবার যখন মৃত্যুতে আপনি যখন মৃত্যু মুখে পতিত হন বা মারা যান তখন কিন্তু গিয়ে বা ডাক্তারদের যে আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলাম। তো ডাক্তারবাবুদের সম্মান করতে রাখুন, ভগবানের পরে ডাক্তার তাদের সম্মান দিয়ে, কিছু সমস্যা থাকলে আপনার ফিজিক্যালি না আসে আপনারা তার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন। তো আমি আশা করি যে এই যে হসপিটাল আগামী দিনে বিভিন্ন স্পেশালিটির কাজ করবে, সেটা যেন একবার হয়। আমরা চাই না যে বাইরের কোনো পেশেন্ট বাইরে যায়। এখন আমরা এখানে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমেও আমরা একটা নতুন জিনিস 5,000 করে এইমস এর সাথে আমরা মুভ করেছি, বলে স্যার বাইরে যেতে হবে, আমাদের কিছু সাহায্য করুন। বাইরে যাওয়ার কি দরকার, আপনি টেলিমেডিসিনে আপনি কথা বলুন, পেশেন্ট পার্টি যে ডক্টর এখানকার আছে, কনসালটেন্ট থাকবে, এবং সমস্ত হিস্ট্রি তার হিস্ট্রি সিট আমরা পাঠিয়ে দিই এইমস এর যারা বিভিন্ন যেসব স্পেশালিস্ট আছে তাদের কাছে। তাদের টাইম শিডিউল আছে, সেই টাইম শিডিউলে কথা হবে, এবং আগের থেকে যখন ওর কেস শিটটা পড়বে সবকিছু জানবে, কিন্তু তাহলে সময়ও কম নেবে, পেশেন্ট খুশি, পেশেন্ট পার্টিও সুবিধা। এর মধ্যে আমি গত যে মুখ্যমন্ত্রীর সময় বেশি বলছে প্রায় 5-6 জনকে আমি 5,000 করে দিতে হয়। আমরা বললাম এটা আমরা বেয়ার করি, তোমার দিতে হবে। আমরা এখানে আপনারা সবাই জানেন মুখ্যমন্ত্রী এটা আমরা অভিযান আমরা চালিয়েছি। তো সেই মুখ্যমন্ত্রীর নামে যে অভিযান চালিয়েছে সেটা হচ্ছে 65% মানুষ দেখা যায় যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজে মারা যায়। নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে দেখা যায় হার্টের পেশেন্টের রোগ, হাইপার টেনশন, আপনার ক্যান্সার পেশেন্ট, এবং বিভিন্ন আপনার ধরুন ডায়াবেটিসের পেশেন্ট, এরকম অনেকগুলো আছে। তার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী নামে একটা অভিযান চালিয়েছি, এবং তাতে দেখা গেছে ইট ক্লিকড, খুব ভালো হয়েছে। মানুষ কিন্তু সেই জায়গা থেকে অনেকটা সুযোগ এখানে এই অভিযানে তার আগের থেকে তার যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর, সেটা কিন্তু ওনারা এই সুযোগটা পাচ্ছে।
We'll take a short break. Keep watching. Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. I can fly above imagination. ICFI. Welcome back. The Madras High Court has permitted the Tamil Nadu government to proceed with its decision to issue job appointment orders to the families of those killed in the Karur stampede. However, the court clarified that the appointments will be temporary and subject to further orders. An advocate has approached the Madurai bench of the Madras High Court seeking a direction to restrain the Tamil Nadu government for issuing or implementing any government appointment orders arising from the Karur stampede until the proceedings related to the incident currently pending before the Supreme Court attend finality. கரூர் சம்பவத்தில் இறந்த 41 குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பாக வேலை வாய்ப்பை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ் உள்ளது. அதை எதிர்த்து சீக்கிரம் திருமுருகன் சார்பாக அந்த வழக்கு ஆஜரான அட்வொகேட் நான். கோர்ட்டில் என்ன நடந்ததுன்னா, இந்த இப்போ கொடுத்துருக்கிற அப்பாயின்மெண்ட்டு டெம்பரரி, அதனால் இப்போதைக்கு அது போகட்டும் கொடுக்குற மாதிரி. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பயணத்தில் இருக்காரு, அதனால் அந்த விழாவை நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஆனால் 21ஆம் தேதி இதை குறித்து மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்படும். 2.25 மீட்டராக அது எடுக்கிறாங்க. இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லுவாங்க. இது இப்போதைக்கு டெம்பரரி தான். அப்போ கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே இதே மாதிரியான சம்பவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறா. அந்த ஆஸ்பெக்ட்லையும் ஏற்கனவே இங்கே நிலவில் இருக்கிற ஜியோ 18 2020 ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா, இல்லை புதுசாக ஏதாவது பாலிசி கொண்டு வர்றாங்களா, அந்த ஆங்கிள்லையும் இந்த விசாரணை போகணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். 21ஆம் தேதி இதோட ஃபைனல் முடிவுக்காக அட்ஜென்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போதைக்கு. ஆமா, 32 வேலை வாய்ப்புமே தற்காலிகமான வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்லி கோர்ட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது கவர்மெண்ட் தரப்பு. மிக முக்கியமான வாதம் என்னன்னா, கம்பேஷன் அடிப்படை நீங்க ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்குறீங்கன்னா ஏற்கனவே தமிழக அரசுகிட்ட ஒரு ஜியோ பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை கண்டிப்பா நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கு வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸை, வெல்ஃபேர் பாலிசி கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஆனா அது ஆர்டிகல் 14 and 16 சேலஞ்ச் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும். அப்போ எஸ்கிராஷியா கொடுக்கறதுல இல்ல காசு பணம் கொடுக்கறதுல எங்களுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை. இங்க இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி தமிழக அரசு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுக்கும்போது தான் நமக்கு அங்க பிரச்சனை. அதை எதிர்த்து தான் இந்த நீதிமன்றம் வந்திருக்கு. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.